हेलो भाई। हेलो भाई, आज 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 क्या कर रहा है? आज मीडियम प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश करेंगे। कल हम लोग ये कर लिए थे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंग्लिश, इसमें कुछ पार्ट बाकी था जो कि आज हम क्लास में कवर कर लिए थे। तो आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन क्विकली। My main camera is here, and this is my secondary screen, which is a monitor, and I'm solving on this monitor. So I will just drag it down here. Let's quickly adjust this. तो ये हो गया, and let's minimize this. Let's go there. Let's open my notes. Yeah, here it is. So लिंक लिस्ट कर रहे थे, राइट? तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लूप। तो ये मेरा हो गया था भाई। ये स्लो फास्ट का तो एक कॉन्सेप्ट था, मतलब वो एक्स डी एक्स जो हम लास्ट वीडियो में छोड़े थे, वो हम लास्ट क्लास में कवर कर लिया। यही था शायद। हाँ, ये थोड़ा गंदा हो गया। ये फेयर नोटबुक है तो इसको साफ कर लेते हैं। ये हो गया, हम ये समझ लिए थे। तो अब बात है ये वाला प्रॉब्लम करने का, विच इज लेंथ ऑफ अ लूप इन इंग्लिश। एंड लीड कोड पे इसका प्रॉब्लम लिंक नहीं है, तो आई विल जस्ट go on Geeks for Geeks for this problem, which is length of a loop in a linked list. तो सॉल्व नहीं किए थे क्लास में, बस एज अ पीक देखे थे क्या है प्रॉब्लम में। तो ये रहा प्रॉब्लम। अब हम कुछ बोलेंगे नहीं, अब हम ये सॉल्व करते हैं। एंड या ये ऐसा क्यों है भाई? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? ट्राइड ऑन गीक्स फॉर गीक्स। ये आ गया इंटरफेस, ये आ गया मेरा प्रॉब्लम। इसको हम डार्क मोड कर सकते हैं, आई गेस कर तो सकते हैं। यहाँ से होता है गेस। ये तो हिंट है भाई, डार्क मोड कहाँ से होता है? फुल स्क्रीन पे शायद ऑप्शन आ जाए, ये रहा। या ये और स्ट्रेच नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट्स सी द प्रॉब्लम। और अब माइक हम कर रहे हैं ऑफ। आई विल जस्ट सॉल्व व्हाट आई एम थिंकिंग, आई विल राइट इट ऑन द पेपर। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो।
So let's continue with our playlist. But before that, hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely well. So the problem that we will be solving today is finding out the length of a loop in a given linked list. So what is the problem stating? It is stating that you'll be given the head of the linked list, and if there is a loop, you'll have to return me the length of the loop. What is the length of the loop? What is the definition of a loop? If there exists one node, if there exists a minimum of one node where you can start and end. So let's take one node. Let's assume 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So the length is 7. You can take any node and it is guaranteed that there will be one loop. So the length of the loop is 7. You can start counting at any node. It can be 3, it can be 4, 5, 6. Each of them will be giving you a length of 7. And this is what we want you to return. What if you're given a linear linked list, something like this? In this case, is there any loop? No. In such cases, you'll be returning a length of 0. Yes, that is what you're returning because there is no loop. So how can we solve this problem? What if this problem comes up in an interview? We will be following the exact same method that we followed while solving the previous problem, which is detection of a loop in the linked list. In case you haven't seen that lecture, I'll be leaving out the timer 2, I'll go here temporary, make the timer 3, go here temporary, make the timer 4, go here temporary, make the timer 5.
then I'm going here, will be hashing concept. Why hashing? It's very obvious because if you're talking about a loop, it means any particular node will be revisited, So we need to remember, and the only technique that helps us to remember is hashing. So we will be using the hashing concept. Can I say, I'm traversing from here, I'm going here, then I'm going here, then I'm going here, then I'm going here. How do I find out the length of the loop? What if I can keep a track, like the timer? Maybe yes. So what I'll do is, I'll keep the temporary at the head, and I'll set the timer to be 1. And I'll start moving. I'll go here temporary, I'll make the timer 2, I'll go here temporary, make the timer 3, go here temporary, make the timer 4, go here temporary, make the timer 5, go here temporary, make the timer 6, go here temporary, make the timer 7, go here temporary, make the timer 8, go here temporary, make the timer 9, go here temporary, make the timer 10, and this is when you realize you visited a node twice. Previously, you visited at 3, now you're visiting it at 10. So what will be the overall length? Can I say 7? Because it took you 7 seconds, kind of. Thereby, if I compute that one step is taking you 1 second, can I say it is 7? The length is 7. I can, but I need to remember this timer. So what I will do is, I will take a data structure, and the best data structure is to use a map. And what will we be storing? We will be storing the node, the entire object, not the values. The object and the timer. This will be an integer, plain integer. And now we will be starting with the head. So initially the object is having 1, and I'll put the timer as 1. We'll move the temporary to the next, and the timer will increase to 2. So next will be 2, and it will be 2. Next we'll move it to 15. So temporary will go to 15. Remember, do not store 15, store the entire node 3. After that, the temporary will move to 4. And you keep it moving, and there will be a point when, like, it will move here, then it will move here, then it will move here, then here, then here. After that, it will reach here when the timer is 10. The moment the temporary reaches 15, it checks out what is the value, and it gives you a value of 3. So you pick out that value 3, you take the current value, you subtract, and you get the length. Isn't that easy? That's easy, right? That's what you have to do. Slight modification, and you're done with your brute force. So let's quickly write down the pseudocode in case you want the code for C++, Java, Python, or JavaScript. All the links will be in the description. So what do we need? We need a map data structure, which will be storing the node and the timer, can be stored in an integer. We need a temporary, which will be used for traversal, and we need a timer, which will be initially 1. Perfect. This is what we start off with. And we know that we will be traversing till the temporary node is not null. Why not null? In case it is a linear linked list, it will end up reaching the null. Only in case of loop, it will never have a null. Whenever you add a node, you first check, was this previously visited? So we say, map, where you previously having this temporary node, in case, again, depending value, this is what the length will be, and you straight away return. And in case, it's not in the map, it's a new node. So probably put in case, it's not in the map. Minus value, this is what the length will be, and you straight away return. And in case, it's not in the map, it's a new node. What is the current timer? It's stored in your timer. Minus value, this is what the length will be, and you straight away return. And in case, it's not in the map, it's a two, not 1 and 1. Done. After that, again the same thing. The slow moves by 1 and the fast moves by 2. So we erase this and erase this. After that, the slow moves here. After that, the fast moves here. And this is where they collide. So this is the node where the slow and the fast pointers collide. Hence, I can definitely say that there is a loop. I've talked about the intuition in the previous video. In case you haven't seen, the link is in the description. So I'm sure that there is a loop. Now what is the next step? I need to figure out the length. Can I say, if I start at 8, I will reach back at 8. If I start at 8, I will reach back at 8. I'll use this, yes. This part was not necessary. मतलब फिर से हमको वो फर्स्ट नोट पे रखना जरूरी नहीं था, कहीं पे बीच में भी होता तो हो जाता. I'll keep a counter. The counter increase. Your counter is detecting the loop. That will be, yes, that will be your length of the loop of the linked list. Can I write the code? I can. So this was the code which was detecting the loop in a linked list. You basically started by taking slow and fast pointers pointing to head, and you know this conditions. In case it is a linear linked list, you need to check if you are reaching null or if you are reaching the last node. Again discussed in the previous video. So we know this, that the slow will move by 1 and the fast pointer will move by 2. The moment this happens,
this is where I have to find the loop. This is where I have to find the length rather. So can I say, if the slow equal to fast, return, find length, and maybe just pass on the slow and fast pointers here. Write the find length function, which is length. Length, one step, not two steps, just one step. And now until you count, and let's move it the length of the loop. So once you return the, because that will be the length of the loop. So count, because that will be the length of the loop. So once you return the count, this is what it will return straight away. And in case there is no loop, you'll be returning a 0. Quite simple. And if I quickly go back into the code editor, you can see that you'll have to complete this function definition. I've written the exact same code, the exact stuff. I'll quickly submit the submit button. So click the submit button and see if it's running fine. It is. So the C++ code runs. I'll copy paste the same piece of code. I'll go to Java now. And in Java, what I'll do is I'll copy paste it. And over here, let's quickly give it tab. Let's remove the pointers. Removed. Low caps. And done. Let's remove this. Let's make it dot. Let's make it dot. Done. We need the find length function. So let's quickly go back to C++ and get the find length function. So come back to Java, and over here, please make sure it is private static. And then over here, remove the pointer concepts because it is Java. Please consider subscribe because that will be the length of the loop. So once you return the count, this was a loop. You are bound to reach back at the same
the length of the loop. And I'll start moving the fast pointer. You can move the slow as well. Fast moves to the next, the counter increases. The fast moves to the next, the
तो भाई हो गया ये प्रॉब्लम। द टेक अवे ऑफ द प्रॉब्लम इज क्या कैसे क्या हुआ। तो हमको लेंथ निकालना था लूप का। तो हम सोचे कि इफ नो लूप मतलब लूप नहीं है तो रिटर्न जीरो कर दे। तो हमको लूप को कैसे डिटेक्ट करते हैं लिंक लिस्ट में वो तुमको पता था वाइल कंडीशन से जो होता है। तो ये वाइल लिख के हम यहाँ पे रिटर्न जीरो लिख दिया मतलब ये जो भी है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद रिटर्न जीरो करना है तो ये पहला तो हो गया। उसके बाद हम सोचे कि अगर लूप नहीं है तो हमको लूप है तो लेंथ रिटर्न करना है। तो हम सोचे फिर लूप कैसे डिटेक्ट करें कि लूप है कि नहीं। तो हमको पिछले वाले पॉइंटर पिछले वाले क्वेश्चन से ये पता था कि ऐसा कुछ अ, ऐसा कुछ होता है। ठीक है। मतलब एक्स डिस्टेंस वाई होता है ये डी माइनस वाई होता है और हमको रिलेशन पता था कि एक्स जो होता है ये डिस्टेंस ये के डी प्लस डी माइनस वाई होता है। तो हम अब ये लिखे इन प्रीवियस प्रॉब्लम वी चेंज वेयर स्लो वाज पॉइंटिंग एट वन एट टू। अब स्लो यहाँ पे था तो हम लोग चेंज करके यहाँ कर दिए थे। फिर फास्ट को मूव किए थे कुछ और ये चीज और स्लो तब तक यहाँ आ गया तो यहाँ पे लूप स्टार्ट होता है। वी चेंज वेयर स्लो वाज पॉइंटिंग टू वंस डिटेक्टिंग द लूप टू फाइंड वेयर लूप स्टार्ट। लेट्स थिंक इफ वी कैन यूज द सेम आइडिया। तो हम लोग हम सोचे कि इसी से कर सकते कि नहीं। तो ये हुआ फिर मतलब हाँ। तो हम फिर करें x इज इक्वल टू आई नीड टू फिगर आउट वेयर व्हाट d इज राइट। ये हमको समझ में आया यहाँ पे d निकालना है कि यहाँ से ये क्या है राइट। तो टाइम इन विच स्लो मूव्स d माइनस वाई। हम फिर कुछ सोच रहे थे d माइनस वाई क्या होता है तो उसके बाद d को हम सॉल्व किए। मतलब मगर इससे फिर कुछ हुआ नहीं फिर हम सोचे कि अ, फिर ये सब किए वही इक्वेशन सॉल्व की d निकाले। तो हम ये सोचे कि आई कैन आइदर मूव स्लो टू हेड स्लो को तो हम आइदर यहाँ कर सकते हैं या जहाँ पे लूप स्टार्ट हुआ है ये डिटेक्ट कर रही है तो स्लो को हम यहाँ पे भी मूव कर सकते हैं। दो जगह स्लो मूव हो सकते हैं एक यहाँ या एक यहाँ। वेयर लूप स्टार्ट तो हम बोलते हैं ठीक है यहाँ पे अगर हम स्लो को मूव कर दें और फास्ट को भी यहाँ मूव कर दें। फिर हम सोचे कि फास्ट अगर एक एक स्टेप बढ़ा है जब तक स्लो ना आए तो जितना स्टेप बढ़ा वही तो डी है। तो वॉट एवर हैपन्स इफ आई प्लेस। फिर हम बोले कि आखिरी से सोचते हैं मतलब फास्ट एंड स्लो एट द एंड मूव ऑन। हम सोचे डी कैसे निकालेंगे फंडामेंटली डी कैसे निकलेगा काउंट से निकलेगा या कैसे निकलेगा। हम सोचे काउंट जितनी बार मूव करेंगे उतनी बार काउंट प्लस करना पड़ेगा। वहां से हमको ये आइडिया आया। मतलब जितनी बार हम क्या फंडामेंटली सोचे कि काउंट कैसे निकलेगा इसका मतलब जितनी बार हम फास्ट को मूव करेंगे उससे काउंट निकलेगा। वॉट एवर हैपन्स इफ आई प्लेस फास्ट एंड स्लो एट दी। ये मतलब यहाँ पे लूप स्टार्ट होता है एंड मूव ऑन स्लो द नंबर ऑफ टाइम्स स्लो मूव टू रीच फास्ट इज इक्वल टू डी। के बाद हम एक एक्स्ट्रा स्टेप किए थे कि हम ये यहाँ पे प्लेस करना जरूरी नहीं था। यहाँ से भी हम स्लो को मूव करते तो हो जाता तो देर इज वन दिस एक्स्ट्रा स्टेप जो हम किए जो कि जरूरी नहीं था बट स्टिल ओके। उससे कॉम्प्लेक्सिटी पे कोई असर नहीं हुआ। कहाँ पे थे हम। हाँ। तो बस उसके बाद हम ड्राई रन किए उसके बाद एक चीज़ और हमको यहाँ पे वो था कि हम काउंट मतलब हम यहाँ पे काउंट करने में हमको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ कि आखिरी में हमको काउंट प्लस वन करना पड़ा। तो काउंट करने का सबसे अच्छा इसमें सोचना कैसे कि काउंट कैसे करें। तो फास्ट यहाँ है स्लो यहाँ है। तो हमको बोलना है सोचना है कि एक दो तीन चार ऐसे गिनना है हमको। मगर हम यहाँ से यहाँ इसको कर नहीं सकते नहीं क्योंकि वाइल लूप में ये कंडीशन है तो वाइल लूप कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं अगर हम स्लो को यहाँ कर दे और ये कंडीशन लिख दे स्लो इज इक्वल टू स्लो नेक्स्ट काउंट प्लस प्लस। तो स्लो को यहाँ रख दिए राइट। अगर स्लो को यहाँ रखे तो मेरा ये काउंट मिसिंग हो रहा है इसीलिए हम काउंट को वन से इनिशियलाइज कर सकते हैं और काउंट को इस काउंट को ऊपर रख सकते हैं यहाँ पे। तो जब भी स्लो फास्ट के इक्वल नहीं है काउंट प्लस वन करो राइट। काउंट को प्लस वन करो और स्लो को बढ़ाओ मतलब या काउंट को नीचे रखे और काउंट को वन कर दे तो इससे भी हो जाएगा राइट। तो यहाँ पे एक बार करके देखते हैं काउंट को अगर हम वन कर दे और ये काउंट प्लस वन में रिटर्न करो इससे भी हो जाएगा आई गेस। हाँ इससे भी हो जा रहा है। हाँ यू गेट ओनली फॉर द ठीक है टफ टेस्ट के सारा पास हो गए। हाँ तो काउंट वन हो गया। फिर हम स्लो को अगला मूव करें और काउंट को एक कर दिए।
फिर स्लो को अगला मूव किया, काउंट को एक कर दिए, फिर स्लो को अगला मूव किया, काउंट को एक कर दिए। अब नहीं मूव होगा स्लो क्योंकि यहाँ पे फास्ट इक्वल आ गया। तो रिटर्न काउंट कर दो, +1 मत करो अगर काउंट को 1 से इनिशियलाइज करो। तो दो टेक अवे, काउंट को 1 से इनिशियलाइज करना है, मतलब कैसे काउंट करना है ये एक सीख लिए, कैसे काउंट करना है, राइट। दूसरा क्या सीखे, दूसरा वही लूप कैसे डिटेक्ट होते हैं बेसिकली। और एक चीज हमको और सीखना था कि यहाँ पर इतना कंडीशन, इज दिस ऑल थ्री कंडीशन नेसेसरी, क्योंकि स्ट्राइवर सिर्फ दो कंडीशन यूज करता है। आर ऑल द थ्री
हेलो। हेलो, हाँ। अभी बढ़िया आवाज आ रहा है, पता नहीं हम जो उतना देर बोले रिकॉर्ड हुआ भी कि नहीं हुआ, बट एनीवेज। अब हम ये दूसरा प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, विच इज पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट। अब देखते क्या है। तो अब होता है माइक बंद। लेट्स गो। Even the head of a single related to it is palindrome of what's the right one, two. ये इजी है भाई, मतलब। इजी प्रॉब्लम आई गेस भाई, बहुत इजी प्रॉब्लम है ये तो। होप आई एम करेक्ट। देख लेते एक बार ट्राई रन करके। तो स्टार्ट एंड करेंगे, स्टार्ट का वैल्यू वन, एंड का वैल्यू वन, तो वन वन इक्वल है।
तो सबसे पहले वो क्या करना है, वो करना है। आ, सबसे पहले हमको लूप के एंड पे चले जाना है। तो उसका जाने का तरीका है, पहले एक दो पॉइंटर ले लेते हैं। लिस्ट, अच्छा लिस्ट, हाँ लिस्ट नोड है ये। लिस्ट नोड, एक पॉइंटर ले लेते हैं स्टार्ट, और एक पॉइंटर ले लेते हैं लिस्ट नोड। अरे ले ले, एक पॉइंटर, अबे मेरा फ्रेंड मेरे को पता है इसका, तो फोन फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। पता नहीं कैसे करते हैं यार, यहाँ से होते हैं क्या? या दैट्स बेटर भाई, दिख रहा है थोड़ा। एक स्टार्ट ले लेते हैं, एक एंड ले लेते हैं। स्टार्ट को हेड से इनिशियलाइज कर लेते हैं, और एंड को भी हेड से इनिशियलाइज कर लेते हैं, और उसके बाद एंड को आखिरी में भेजना, राइट। वाइल, वाइल एंड, क्या करना है, जब तक एंड इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, नहीं, एंड का नेक्स्ट नल पीटीआर ना हो। मतलब आखिरी नोट पे रखना है ना। तो एंड का नेक्स्ट जब तक नल पीटीआर ना हो, तब तक एंड को मूव करना है, एंड का नेक्स्ट। आई होप दिस इज करेक्ट। ट्रैवर्स करना है ना बेसिकली, इससे ट्रैवर्स कर लेंगे हम। एक चीज याद रख लेते हैं, while के अंदर जो भी है, it leaves at this condition, मतलब you are here, you you are here, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, while coil और while लगाना है, while start is greater than equal to end, end पीछे चला गया। if start का जो रिस्पॉन्स, एस टी ए आर टी, स्टार्ट का जो वैल है वो इक्वल इक्वल है एंड के वैल के, तब तक तो स्टार्ट पीछे। अरे यार, अब इसमें पीछे थोड़ी आ सकते हैं, पॉइंटर थोड़ी है। ब्रा भाई, ब्रा, यू कांट गो बैक। फक भाई, अब क्या करें। यही होता है, जो शुरू में आसान लगता है बाद में मुश्किल हो जाता है। क्या करें?
So let's continue the playlist. But before that, hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely well. So the problem that we will be solving today is check if a given linked list is palindrome or not. So what is the problem stating? You'll be given the head of the linked list and you have to check if it is palindrome or not. Now what is the definition of palindrome? Anything written in reverse should be the same. So basically, if you're given a string, something like mom, and if you try to write it in the reverse order, M, O, M, it's the same mom, right? So any number, any string, any given thing, if you try to write it in the reverse order, it is the same. It is the same. Then you call it as a palindrome. Now, what is the definition in terms of linked list? You cannot just pick up the data. You cannot pick up the data and write it in a reverse order. What you will do is, you'll take the last, place it, 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 and then compare. If they are equal, they are right. So if such is the scenario, you will be returning true. Otherwise, you'll be returning false. So the question is stating given a linked list. So basically, you'll be given the head of the linked list. You'll have to return true if it is palindrome. You'll have to return false if it is not palindrome. So this was the case for odd length of linked list. What is for the even length? It's the same thing. You take the last, take the second last, the third last, fourth last, fifth last, and the first one. So if you again compare, they are similar. So this is also a palindromic linked list. Let's look at another example. You're given 1, 2, 3. Now what 3? Take it, put it into the stack, into your structure, stack data structure. And initially, let's keep a temporary pointing to the head of the linked list. What is the data at temporary? 1. Take it and put it into your stack data structure. Remember, stack is a last in, first out data structure. Remember this. Let's move to the next. What is the value? 2. Put it into the stack. Let's move to the next. What's the value? 3. Put it into the stack. Let's move to the next. What is the value? 2. Put it into the stack. Let's move to the next. What is the value? 1. Let's move the temp. And you reach null and you will stop. The moment you stop, the stack will have all the values. Look at the stack, it has all the values. Let's do the step 2 of the algorithm. Step 2 is again taking the temporary, placing it at the head. This time it will be the comparison step. What you'll do is whatever is the value, and you'll compare it with the top element of the stack. Stack is in last. I think it's going to be super simple, which is temporary push or add depending on the language that you're using. Temporary of data done, and then you can say temporary equal to temporary dot next. So that's the step 1. This is the step 1 where you store everything in your stack data structure. Let's try out the step 2. What will be the step 2? You need to compare, right? Never ever temp not equal to reaching complexity for step 2. Can I say big of n? Very simple, because again we are traversing. So what is the overall time complexity? And he'll ask you to optimize it. So let's quickly try to where the interviewer will not be happy with the extra space that you're using, and he'll ask you to optimize it. So let's quickly try to optimize. So we cannot use any external data structure, which brings us to the place that whatever we need to do it in the given linked list. We need to do some link changes, or whatever algorithm is, it should be restricted to the given linked list. Let's try to think. What are we trying to achieve? Compare 1 and 1. Compare 2 and 2. Compare 3 and 3. If the first half is compared with the second half, and all the elements are matching, it's a linked list. If one of the elements in that is not matching, it is not a linked list. That's what I'm trying to achieve. What is the problem that we are facing? Like, we can simply keep one pointer at the head, we can keep one pointer at the tail, match head with the tail, matching, move the head one place ahead, move the tail pointer one place back, and then match it again. But the question arises, it's a singly linked list, it's not a doubly linked list. How do you move back? How do you move back? That's where the problem starts. So overall thing is, I know I need to compare the first half and the second half. That is in case of a even length linked list. We'll talk about the odd length afterwards, but in case of even length, we need to match the first half and the second half. But the problem that is arising is I cannot go back because the links are in the forward direction. It's not a doubly linked list. Okay, how do we do it? So first thing that comes to my mind is, okay, what if somehow I can change the links and make it like make one's next pointer pointing to 2, 2's next pointer pointing to 3. In that case, I can stand
stand here and do the traversal. Okay, changing links, reversing the links comes to my brain. Fine, but for that I need to recognize which one is the second half. I need to recognize which one is the second half. So step one is recognizing the second half, right? Let's try to do it. How can you find the middle of the linked list? Yes, the tortoise and the hare algorithm. In case you haven't seen my video on finding the middle of the linked list, go back and watch it. The link will be in the description. Please go back and watch it. Over there we did use something as slow and fast pointers. In case of even length of linked list, we had two middle one and middle two, right? What we will try to do is try to somehow reach middle one. In our middle of the linked list problem, we tried to reach the here, right? Let's try to do it. I'll take slow and the fast pointer. First step, slow and fast moves simultaneously, 1 and 2 steps. Perfect, moved. Next step, slow moves 1, fast moves by 2 steps. Perfect. If you carefully observe, this is standing at middle 1. Here's the middle 2. In this problem, you need to stand at middle 1. You will not go to middle 2, which means the fast pointer will be standing at the second last node. It won't go to the last node or rather null as it did in finding the middle of the node, because over there we were finding M2. So fast will end up going to the null, Okay, so we need to make sure that we stop when fast reaches the second last node, which basically means fast next next should not be null. We keep on moving till that time. The moment what next? तो आज भी अपन लोगों ने सिस्टम डिज़ाइन कंटिन्यू किया। आज के दिन अपन लोगों ने कैशिंग और स्केलिंग, शार्डिंग ये सारी चीज़ें पढ़ी डेटाबेस की, और उसके साथ में अपन लोगों ने 2 इंटरवल्स टॉपिक के डीएसए के क्वेश्चन भी लगा लिए। तो डीएसए और सिस्टम डिज़ाइन चल रहा है कुल मिला। नहीं मोटा है तू, कितना भी मोटा हो, लेकिन फुर्तीला बहुत है भाई। तो आज भी अपन लोगों ने सिस्टम डिज़ाइन कंटिन्यू किया। आज के दिन अपन लोगों ने कैशिंग और
तो आज भी अपन लोगों ने सिस्टम डिजाइन कंटिन्यू किया। आज की दिन अपन लोगों ने कैशिंग और स्केलिंग शार्डिंग ये सारी चीजें पढ़ी डेटाबेस की, और उसके साथ में अपन लोगों ने दो इंटरवल्स टॉपिक के डीएसए क्वेश्चन भी लगा लिया। तो डीएसए और सिस्टम डिजाइन चल रहा है कुल मिला के अभी अपना। तो आज भी अपन लोगों ने सिस्टम डिजाइन कंटिन्यू किया। आज की दिन अपन लोगों ने कैशिंग और स्केलिंग शार्डिंग ये सारी चीजें पढ़ी डेटाबेस की, और उसके साथ में अपन लोगों ने दो इंटरवल्स टॉपिक के डीएसए क्वेश्चन भी लगा लिया। तो डीएसए और सिस्टम डिजाइन चल रहा है कुल मिला के अभी अपना। तो आज भी अपन लोगों ने सिस्टम डिजाइन कंटिन्यू किया। आज के दिन अपन लोगों ने कैशिंग और स्केलिंग शार्डिंग ये सारी चीजें पढ़ी डेटाबेस की, और उसके साथ में अपन लोगों ने दो इंटरवल्स टॉपिक के डीएसए के क्वेश्चन भी लगा लिए। तो डीएसए और सिस्टम डिजाइन चल रहा है कुल मिला के अभी अपना। तो आज भी अपन लोगों ने बेटा मैंने 1 लाख रुपए दे दिए तुम्हें एफडी के लिए, वो मैच्योर हो गई? पापा ये सब मिडिल क्लास वाली चीज है। मैंने एसआईपी की, तुमने मेरे पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए और 15% रिटर्न भी आ गया। 15%? ये लीजिए। अरे वाह यार, मैं तो तुम्हें एकदम नालायक समझता था। ये तो 15,000 रुपए है। हाँ तो 15% वापस आया ना। बहुत बेटा मैंने 1 लाख थाने आ रहे हैं अब हम। चल यार भैया गाड़ी में घूम के मजा आ रहा है, रोज घुमा देना। थाने जा रहे हैं, हैं? थाने। रुक जाएगा मजा। कोई बात नहीं, 2 डंडे खा के आ जाएंगे वापिस। ड्रम 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 उससे नौजवा में उड़ रहा उड़ते To those days that made us who we are. But I know you had to. The next is pointing to null. We should stop, otherwise we keep moving. Perfect. So the first half is done, which is recognizing the second half and the first half. You know one thing, this is the node which is basically slows next. This is the head of the second half. This is the head of the second half. What is my next job? The next job is to make sure the links are reversed so that I can easily traverse. So what I will do is, I'll try to reverse this entire linked list, the second half linked list. I'll try to reverse it. We've already done reverse, right? So I'll call the reverse function and I'll pass slow next. So what will happen is, it will reverse the second half. It will reverse the second half and it will return a new head. It will return a new head by reversing. Once it reverses, how will it look like? It will be something like 1 will be here, 1 will be pointing to 2, 2 will be pointing to 3, 3 will be pointing to null, correct? Can you tell me one thing? Will the 3 be pointing to 1? No, right? You never changed the link. 3 still points to the previous 3 because that is how the original linked list looked like. You only made sure that these links are changed. These links are changed. The 3 is still pointing to 3. It's still connected. Perfect. I've reversed it. What's my next job? My next job is maybe taking 2 pointers. So what I'll do is, I still have slow here. I'll take 2 pointers. One is the first and the other one is the second. And the second will be pointing to the head. The second will be pointing to the new head. Second goes here. Null. The moment it reaches a null, you say stop. Perfect. Again move slow by 1.